Do you know my name, by the way? I just saw it, Prateek. Good. Yeah. काफी awkward हो जाता वरना. What's your name again? Yeah, and every time that I don't know or remember anyone's name, I always say, oh, I didn't get your name. And then that person says, but I never told you. And I'm like, oh, right. So that becomes a little awkward, but yeah. Nice. So, hello. So, by the way, what's your name? Hello and welcome to Do I Like It, a show जहां हम हर बात पे बात करते हैं. And in this episode of our mini series Knock Knock Who's There, I'll be talking to a content creator who puts the real in relatable. अपने characters के through she has satirized our mummies, bhabis, parlor वाली aunties and whatnot. We'll be talking to Sukriti Chaturvedi, formerly known as RJ Sukriti, about her influences, about her comedy style and how she navigates the funny business in 2024. So usually on these chats, I ask the person where you are and I do थोड़ा सा ऐसा मौसम कैसा है small talk wise, but you have stripped me of that opportunity because तुम यहीं पर हो. I know, right? पड़ोसी. Actually, guys, Padosi were the ones who were watching this. Yes. We could have just done this in person, but we didn't know Yes. that we are But actually like both of us are Padosis. too lazy to get out of our to get out of our rooms. houses. So Prateek and I Yes. think right now we are just like I think 2 kilometers apart or something. Yeah. ऐसा करते हैं, तुम वहां से चलना शुरू करो, मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ. बीच कोलैब हो जाएगा. हाँ, वहाँ मिलेंगे, DLF पे मिलेंगे, हाँ. Yeah. But yeah. Okay. So, since we don't have an intro anymore, why don't you do an intro? How do you like to introduce yourself nowadays? My What do own you- self. Oh God. when people ask you, when रिश्तेदार type लोग ask you, बेटा करते क्या हो, तो क्या बताते हो उनको? कहती हूँ hi, namaste auntie. Namaste uncle. So okay, so what do I do? So my name is Sukriti. I create content. मैं videos बनाती हूँ for a living and and kind of really enjoy doing that. And recently मेरे को किसी ने शायद, but that was like really after a long time, किसी ने मेरे से पूछा कि अच्छा, and so this is your full time thing. कितना awkward होता होगा ना ये कि हाँ, मतलब मेरा घर चलता है इससे. I know, और मैंने बहुत दिनों बाद सुना है, तो मेरे लिए it was like a welcome question and I'm like, हाँ जी, यही करती हूँ मैं, this that. And I was a RJ before this. I used to work with a radio station in Delhi. So RJ was still, I felt like a known profession, right? Yeah. तो मेरे mom dad तो for many years used to say कि ये RJ, and I used to tell them कि नहीं, I've left it like 5 years back. RJ थी. Can you stop saying it? I'm not an RJ anymore. But उनको ये लगता था that's मतलब फिर उनको ना वो explain नहीं करना पड़ता था वो कि आप like जैसे ये वीडियो बनाती है तो उसके बाद there's a follow up question, right? Yeah. so that way. But Same, yeah, I make same. videos. मेरा भी यही सीन है that I am not into hardcore news, हाँ, but मेरे घर वाले सब मेरे को बोलते हैं पत्रकार है. True, I can imagine that because my sister is also a journalist. And she's also not like hardcore journalist. So उसको भी she also gets this a lot. And then the follow-up question is, अच्छा तो फिर पैसे बन जाते हैं इसमें? Earning हो जाती है, earning. ना, earning हो जाती है. Earning हो जाती है. कैसे होती है? And then the next question is कैसे होती है? तो अब ये बताओ earning कैसे होती है? Wow. So I tell them कि नहीं, brand deals होती हैं. The platform also, pays you and brand deals होती हैं और फिर कुछ जैसे integrations होती हैं, brand integrations होती हैं, कभी-कभी events होते हैं, ये होता है, वो होता है. So then, I don't know, फिर उनको लगता है कि इतने ज़्यादा नहीं बनते होंगे इसमें कि इसका ये कुछ और क्यों नहीं करती है, मतलब इसमें. So I'm like, so then एक तो money as a subject or as a topic for me especially is very like I don't want to talk about it much, I go like पता नहीं, I think it's our conditioning or whatever, I don't know. So I think वो मेरे लिए, I think I'll still sort of stick to that. तो मैं पैसा थोड़ा मेरे लिए is plays like a secondary role, I feel. But yeah, I don't know, I'm not saying that from privilege, but yeah. थोड़ा तो है ही. नहीं. Even like while growing up, I've seen because in fact I was telling recently in some
नॉट रिसेंटली, कुछ टाइम पहले मैंने बात कि मनी हमारे घर में ना बहुत ही वो था, the villain. It used to be the villain in our house, you know. So there's some, I feel there's some so psychological thing also attached to money. Yeah. So मेरे लिए so I think that a is lot of the upper middle class families में from 90s to 2000s की families में money has always been this, because थोड़ा सा है but उतना नहीं है but उतना कम भी नहीं है, तो it's like in that weird space. It's and you know you've seen fights around it, you know, so वो थोड़ा, you know, it always never becomes your कि मुझे भी वैसा बनना है or something, you know. So I think so I remember somebody asked me, so money more than anything else, money was also like a psychological thing in your house. I said yeah, probably it was, you know. So that is why when you said ना कि लोग पूछते हैं पैसे कैसे कमा लेते हो, तो you know, तो I become very like अरे यार money के बारे में बात करो. So yeah, but nice. So how did RJing start for you? Oh wow, okay, that's a long story. So I was so I'm actually an engineer by qualification. So me too, bro. Yeah, all right. Nice. वो सही बात है ना. Engineers assemble. I think 3 Idiots में ये डायलॉग है कि लोग पहले हिंदुस्तान में इंजीनियरिंग करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है लाइफ में. It's true. कौन सी ब्रांच? Electronics and telecommunication. You? CS. नहीं मैं do I have a CS face? No, that's generally what people do. No. मेरा तो बहुत ही अलग कहानी है यार. It started with mechanical, by the end it became chemical. बहुत लंबी कहानी है, किसी दिन बताऊंगा. Mechanical, chemical. Yes. Oh wow. So are you a mechanical engineer or a chemical engineer? डिग्री पे chemical है. अच्छा. चलो. So it's so weird. Admission form पे mechanical है, डिग्री पे chemical है. Wow. Yeah, so I was doing my engineering and you know मतलब मुझे हमेशा से बहुत पसंद था to be like on stage and you know like hosting stuff and you know like poetry recitation, shloka recitation, this that. So in school also I used to do a lot of these things. So जब मैं college में गई engineering मैंने start करी, and I remember in one of the freshers I think, or I don't know, farewell or some fest, one of the local radio stations of Noida, it was called Radio Noida, they had come as like a radio partner. तो फिर उस टाइम मेरे को लगा कि ये क्या चीज़ है यार, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है. सो आई रिमेंबर टॉकिंग टू देम कि यू नो इफ आई वांट टू वर्क विद यू, इफ आई वांट टू इंटर्न विद यू, तो वो कहते हैं, वो उन्होंने कहा हाँ आप आ जाओ, हमारा ऑफिस फिल्म सिटी में ही है एक्चुअली, सो यू कैन कम if you want to. I said ठीक है. So I remember when that got over, when engineering got over, so I in fact got placed with a IT firm in Noida only. And उसकी ना date of joining बहुत दिनों बाद थी. Like I remember I got placed in September and the date of joining was next year, like not the following year, but next to next year, January. So I had more than a year to do nothing. I was like, अब मैं क्या करूँ? Wow. So so I was like, I remember it was like मतलब आपका confirm था कि आपको यहाँ नौकरी मिल गई है इस जगह पे, हाँ, but joining थोड़ी later है. हाँ, तो मैंने कहा अब मैं क्या करूँ. तो I remember we went back to Radio Noida and I said कि अब तो मुझे मतलब I have the whole time to myself, the whole day, the whole week, not just the weekend. So you know I can come in as like a full-time thing. So they were very sweet and I think I would give them all the credit. They were very sweet and they said कि community radio station से better है कि आप commercial radio station में try करो, you know, if you really want to, because this is the maximum that you can do here in a community radio station. So I was like, अच्छा, तो he said, you know, you should try like a Red FM or a Radio Mirchi and this that. अब उस टाइम किसको लगता है fresh out of college की मिर्ची में नौकरी मिल जाएगी या रेड में, है ना? So I was like, अच्छा ठीक है. So I went out from there. I remember I was with my mom and Film City में तो हैं सारे most of the radio stations. So I remember I went to now it's called Ishq FM, but that time it used to be OA FM. 104.8. So I remember I went to 104.8 की building के बाहर and I said मुझे I just want to talk to someone, I just want to intern and this that. So they were like आप कहाँ से आए हो? You know, anybody would say that. Who are you? Where have you come from? This that. So I was like नहीं, मतलब मेरे पास time है, आप मेरे को थोड़ी नौकरी दे दो ये कर. तो उनको बहुत irritated हो गए वो मेरे से. I remember the guards and all got really irritated. So उन्होंने कहा यार ये number है, आप इस पे call कर लो like that. So they gave me some number of the radio station inside OFM and I remember calling them up and one of the RJs only picked up somehow. It was purely luck. Were you on air? So, no, in one of the landlines.
So the RJ said, हाँ जी ये वो. I said मैं I want to intern with your radio station. तो उन्होंने बोला but where are you? And I said I'm right outside your office. So yeah. So they said कि है. So he was also like ये क्या बोल रही है? तो मैंने कहा I'm standing right outside your building. So if you can just like entertain me. Somebody came after 10 minutes from the radio station. He said, हाँ अच्छा आपने किया तो कॉल. हाँ जी बताइए क्या करना है आपको ये वो. तो मैंने कहा ये है आपने क्या क्या किया है. तो मैंने कहा ये किया है मैंने ये किया है. तो इस लाइक अच्छा ये मेरी ईमेल आईडी नॉट. He said आप इस पे भेज देना एंड देन तो मैंने ईमेल आईडी पे भेज दिया अपना रेज्यूमे ये सब. उसके बाद उनका आ गया एक हफ्ते बाद कि यू नो इफ यू वांट टू जॉइन एज एन इंटर्न बट वी वोंट बी एबल टू पे यू एंड दिस दैट. आई सेड हाँ दैट्स ओके. सो दे टुक मी एज एन इंटर्न इन Naved's show. I remember Arjun Naved. So they said, you know, would you like to be? I said, हाँ, of course, this, that. And did you listen to his show पहले? Of course, yeah. I was a listener. तो पूरा so I was like, moment. I was like, oh my god, this, that. तो मैं तो फिर Naved के show में I started. And did you know how he looked like? Because no, I knew during the RJ hunt because I met him. So that time I knew. So I was like, अच्छा ठीक है. So then I was, and Naved, you know, is just such a big RJ. I think he's one of the biggest in the country. But he still is so down to earth, you know, when you meet him. I don't know if you've met him or not. He's so down to earth, you know. He would make you feel like you are so important, you know. Like वो ऐसा feel कराते थे कि उनका show मेरी वजह से चल रहा है, which is obviously not true. It was obviously not true, but he used to make you feel that important. So you know जब आपको इतनी importance मिलती है, so you really start enjoying in that place, right? कि अच्छा you are being heard or you know you are being seen. So मुझे especially from the engineering background तो और अच्छा औकात है कोई मेरी. So I was like, you know, they were like, you get us good stories. तो मेरा यही काम होता था as a intern, you know, to get content out. क्या चल रहा है news में, क्या चल रहा है, किसका interview line up कर सकते हैं, this that. तो बड़ा मजा आता था मुझे. I did that for, I remember, I interned with Mirchi for 8 months, I think. Yeah, 7-8 months. अच्छा अब now ये वाला हमारा IT वाली प्लेसमेंट का टाइम आ गया था ज्वाइनिंग का. तो और मुझे इतना मजा आ रहा था यहाँ पे. तो I was like, I don't want to leave this place, you know, like वहाँ पे क्या होगा, what am I going to do? So I remember मैंने उनको बहुत टालने की कोशिश की कि you know क्योंकि मुझे लगा कि शायद ये नौकरी दे दे, शायद मिर्ची नौकरी दे दे, बट उन्होंने नहीं दी. तो देन इट वाज लाइक आज रात को डिसाइड करना है कि कल वापस मिर्ची जाना है या यू हैव टू गो टू दिस न्यू ऑफिस. आई वाज लाइक व्हाट डू आई डू नाउ? सो आई रिमेंबर देयर वाज अ ह्यूज डिस्कशन एट होम एंड यू नो आवर रिलेटिव्स हैड कम एंड दिस दैट एंड एवरीवन वाज लाइक कोई जरूरत नहीं है, कल से जाइए यहाँ पे एंड यू नो यहाँ पे क्या है ये वो. But my parents, you know, surprisingly were very supportive because probably they had seen this or probably they were seeing how much fun I was having. I have no idea. Yeah. So, you know, they said कि यहाँ पे मिलेगी नौकरी. तो I said, I don't know. So, and they said कि, I said, but मैं इतनी बुरी तो नहीं हूँ, मतलब कहीं ना कहीं तो मिल जाएगी. Yeah. So, they were like, अच्छा ठीक है, फिर let it be. So, I was like, are you sure? Yeah. So, I left that job and then I remember coming back to Mirchi and telling my boss that I've left my job. So, you know, please मेरे को hire कर लेना. So, I think that's when he also realized that I was actually serious because अभी तक उनको लग रहा था she's just, you know, this passing time. So, then they hired me after 2 months. What's the mind state जब तुम वो final ties cut कर रहे हो तो engineering के साथ? Because that मतलब that उसमें relief भी है कि चलो अब इस गली जाना ही नहीं है कभी लाइफ में. But there's also थोड़ा scared भी है because for me it was very क्योंकि मैंने I never worked engineering में. मैंने थर्ड ईयर से ही सोच लिया था कि प्लेसमेंट में बैठना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना. So for me it was like कि देखना ही नहीं है इस तरफ. तो मुझे ऐसा लगता है that you know I am people मुझे ऐसा लगता है people are born with the mindset of engineering is what I feel. Not everybody has that. You know, because even while I was in college, you know, I used to see people who were genuinely interested. कि अच्छा है ना कि हाँ कि अगर ये मशीन चल रही है तो इसके पीछे की क्या चीज है इसमें. You know, तो वैसे like जैसे वो 3 Idiots में आमिर खान का कैरेक्टर है, स्क्रू ड्राइवर लेके घूमता है. there are actually people like that. They would want to know कि अच्छा इसके पीछे क्या है और how is this working और how बल्ब कैसे लग सकता है, ये whatever, you know, little things. तो वो आते हैं आपका एक माइंड जो मेरा नहीं था. You know, so I still remember when I joined engineering also, I remember I came to my mom and I said that, you know, if you want, I can get great marks because I was really good at mugging up and, you know, very good. So मैंने कहा तो मैं रट्टा मार के मैं एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकती हूँ, but I know that I will never be a good engineer. I just knew it.
So and I remember मेरी mom को उस time लगा था कुछ भी बोल रही है, अच्छा देख लेंगे type of thing. और उस समय 3 Idiots आ गई थी? आ गई नहीं. So कोई तो रेफरेंस दे सकता था कम से कम तब. क्योंकि मेरे टाइम पे ये लकी चीज थी कि 3 Idiots भी आ गई थी, तमाशा भी आ गई थी. Oh, nice. मुझे तो while I was doing engineering, I think तब आई थी 3 Idiots. So I remember my dad also asked me कि तुमको भी engineering नहीं करनी है क्या? और मुझे तो what question is this now? CGPA याद है अपनी? हाँ अच्छी थी, मतलब बुरी नहीं थी. I think it was 8, 7.7 ऐसा कुछ था. Not bad. From there, from RJ to a content creator and a YouTuber essentially. Now, would it be correct to sort of call you an influencer? I mean, and I want to understand what is the other side of the influencers को कैसा लगता है जब उन्हें influencer बोला जाता है. तो मुझे तो मतलब I'll purely speak from what I think and my experience. Well, I don't know about other influencers, but I don't like that term much. You know, Okay. I feel that it just comes with a lot of responsibility. And in fact, I always tell people, can you please not write influencer? Can you just call me a creator? Because वो ना फिर एक I think in back this of the mind. episode, influencer secret. तो मुझे ना ऐसे बैक ऑफ द माइंड में हमेशा रहता है कि कुछ मैं गलत नहीं पुट आउट करूँ अपने कंटेंट में. लाइक आई ऑलवेज ट्राई एंड हैव दैट probably बैकग्राउंड चेक कर लेती हूँ मैं थोड़ा, जब भी मेरे को थोड़ा बहुत लगता है तो मैं डेफिनेटली कर लेती हूँ. और समथिंग दैट आई वांट टू स्टैंड बाय और हैव opinion about, or something that I really want to talk about. Like one of my favorite topics is periods actually. So I love creating content on that, you know, which is something which is such a taboo still in a lot of places. And also because I was just thinking about recently this whole social change जो आया है with platforms like Instagram, YouTube, it has really sort of changed the definition of the word celebrity. इन्फ्लुएंसर तो पहले था ही नहीं कुछ, बट सेलिब्रिटी भी पहले जिन लोगों को सेलिब्रिटी माना जाता था अब वो थोड़ा चेंज हो गया. लाइक वुड यू कंसिडर योरसेल्फ अ सेलिब्रिटी? आई वुड सॉर्ट ऑफ कंसिडर यू अ सेलिब्रिटी, राइट? सो लाइक यू आर अ सेलिब्रिटी एंड शाहरुख खान इज अ सेलिब्रिटी, सो वो बहुत चेंज हो गया. बहुत चेंज हो गया. नहीं यार, आई थिंक ऑडियंस भी चेंज हुई है. आई फील ऑडियंस का पर्सपेक्टिव भी चेंज हुआ है. ऑडियंस भी आई फील इवॉल्व हुई है. तो आई थिंक हाँ, मतलब सेलिब्रिटी अगेन, मतलब हु इज दिस, इट्स वेरी सब्जेक्टिव. लाइक हु इज, बट डू यू फील लाइक अ सेलिब्रिटी दो? मतलब ऐसा लगता है कभी आसपास पब्लिक पहचानती है या कभी वो, लाइक माय लिटमस टेस्ट फॉर सेलिब्रिटी इज कि ये मेट्रो में आ सकता है या नहीं? हाँ, मैं तो जाती हूँ मेट्रो कभी कभी. But no, मुझे ऐसा लगता है and people who really come and approach you for photos or whatever and stuff, मुझे तो लगता है कि hats off to those people, क्योंकि it requires a lot of guts. मुझे ऐसा लगता है to approach someone. Like मेरे सामने अगर शाहरुख खान आ जाए, मैं 2 बार सोचूंगी कि मैं जाऊँ उसके पास या नहीं. You know, मैं एक बार मैच देखने गया था और उस तरफ मतलब हम लोग स्टैंड्स में थे और बाउंड्री के तरफ दूसरी तरफ आरपी सिंह बैठा हुआ था. And he was the 12th man in that match. और मेरे को ऐसा कोई फैन नहीं था मैं उसका, but I wanted to talk to him. मेरे से वो 10 कदम नहीं चले गए for आरपी सिंह. Imagine धोनी अगर होता वहाँ पे या कोई शाहरुख खान होता तो क्या सीन होता. मुझे तो बहुत ही, तो मुझे जब भी कोई आता है ना कि कैन I've seen your video, तो मुझे लगता है यार thank you. एक तो number 1 you're watching and number 2 that you have actually coming up and you know saying. So I think वो मेरे लिए बहुत ही. Do you have like a term for your fan club? जैसा होता है. No यार, not yet. I should ना. Ooh, that's a good one actually. But नहीं, मैं सोचती हूँ कि मैं बनाऊँ या नहीं बनाऊँ. What's the sweetest thing somebody has told you when they meet you? Sweetest thing somebody told. I remember there was this one girl who started crying. तो मेरे लिए it was like, ये मतलब मुझे लग रहा है ये पक्का she knows, like is she confusing me with someone else? आप सही घर में तो आए हैं ना सर. तो मुझे ऐसे रोड पे वो मिली. I don't know, there was like a huge group and they were very young kids, you know, like
कॉलेज फर्स्ट ईयर टाइप के होंगे, और वो बहुत ही ऐसे ग्रुप खड़ा हुआ था, आई रिमेंबर, एंड वन ऑफ देम आई थिंक स्पॉटेड मी एंड शी केम एंड शी started crying and she was, I could see that she was shivering and she started crying. तो मुझे ऐसा लगा कि भाई तो रो क्यों रही है यार, लाइक यू नो, तो वो मेरे लिए बहुत ऐसा था कि what is happening. तो and I didn't know how to react. I was like मैं इस पे क्या बोलूं, तो वो मेरे लिए एक था. And one of the other sweet message I remember was it was actually a DM. Somebody had messaged, I think this was during lockdown or something, and he was very thankful to me, that guy. He said that I'm very thankful to you because my mom was in the hospital, she had COVID or something, and she said कि हम लोग उनको ना बहुत सारे videos दिखाते थे while she was, you know, and she used to laugh on some of the videos, and some of those videos were yours. So thank you, you know. And he was like, this long thank you note. Yeah. Thank you, you know, because of you, she felt happy in those gloomy days and gloomy times. So वो मेरे लिए was very like, oh my God, you know, because आप किसी कोने में बैठ के वीडियो बना रहे हो, and how is it affecting someone somewhere? You have no idea, and you will never know. So for me, that was very moving. I was like, wow, matlab, this is, I have never heard of this before. So that was very sweet for me. I was like, wow. And again, that again is too much pressure on you. That are you influencing the right way or not? You know. So वो मेरे लिए वहाँ पे मेरे को लगा कि wow, मतलब if people are getting affected this way, then I mean, hats off to. मुझे ऐसा लगता है internet is a blessing in this way. Have you ever gotten in trouble for any video that you've made? कुछ ऐसा बोल दिया हो जो public hate कर रही है, something like that? नहीं, तो मुझे याद है कि एक बार मैंने ना एक I think Zumba instructors पे एक वीडियो बनाया था. कुछ टाइम हो गया उस बात को, तो मुझे तो again it was my observation कि this is how I feel about them, जो भी, because I just feel they are very energetic all the time, right? So मैंने कुछ तो उस पे वीडियो बनाया था, I remember, and a lot of Zumba instructors, I think, हाँ, तो उन्होंने मेरे को इतना DM पे बोला कि अरे आपको पता ही नहीं है, आप कैसे दिखा रहे हो Zumba instructors को, आप कैसे दिखा रहे हो, ऐसे तो नहीं है हम लोग, and you should come and attend a Zumba class with me, ऐसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं to understand. तो वहाँ पे मेरे को लगा कि probably I triggered some people, but मुझे ऐसा लगता है अभी कि you should always put it out as your observation. You should not generalize it. I think when you generalizes it is when it becomes the problem, really. Because and you think the audience is able to make that distinction? या तुम्हें क्या काम करना पड़ता है वो डिस्टिंक्शन और क्लियर करने के लिए? नहीं, मुझे लगता है कि ऑडियंस तो आप कभी भी वो नहीं, मतलब आप उनके दिमाग में घुस के तो नहीं आप वो कर सकते, बट फ्रॉम योर कॉन्शियस यू शुड बी क्लियर कि मतलब मेरा ये कहना है. लाइक कल को अगर आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़े तो बोलोगे मैं अपने तरफ से तो क्लियर थी भाई, तो अब आपने ये सोचा ये आपकी गलती. तो यू नो, लाइक इफ यू से दैट वन Zumba instructor, you are still saying अच्छा okay, but if you say Zumba instructors be like, तो वो आपको लगेगा कि ये तो जनरल स्टेटमेंट हो गई. This small thing makes so much of a difference. It does. That one teacher in school, you know, so you won't say teachers in school. Be like. So I think वहाँ पे these little words. अब I don't know. You are right. I don't know कि audience कितना इसको आपकी तरह से लेगी. But but at least you have not. So are you planning to start Zumba classes anytime soon after this debacle? No, ये बहुत टाइम हो गया इस बात को. कि वो एक्स्ट्रा करवाएंगे तुमसे. This was during lockdown or something. I remember. हाँ. तो वो मेरे को लगा था एक दो जगह कि मैंने थोड़ा ज़्यादा वो कर दिया. एक दो बार और, I can't remember any specific one right now, but हाँ एक दो बार और हुआ था ये. हाँ. So I try and refrain from like political stuff and religious stuff. वहाँ से तो मैं भाई अब जुम्बा पे इतना हो रहा है तो फिर पॉलिटिक्स छोड़ ही दो. और मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना किसी को तो आपका वीडियो बुरा लगेगा ही. तो वो तो you can't make everyone happy. Is there any topic जिस पे किसी को बुरा नहीं लग सकता? like कभी सोचने की कोशिश की है कि कुछ तो ऐसा होगा जो या तो यूनिवर्सली लव्ड है तो मैं उसकी तारीफ कर दूं, या यूनिवर्सली हेटेड है तो मैं उसका मजाक उड़ा दूं. कुछ ऐसा है? नहीं, नॉट रियली. कुछ है ना, मतलब जैसे चाय भी है. अब कॉफी लवर विल से नहीं, कॉफी बेटर, यू नो. सो यू नो, इफ यू गो ऑन अ हॉलिडे कहीं पे माउंटेन्स में तो जैसे अरे नहीं माउंटेन्स
sorry, they'll say nahi, mountains are so overrated, you know, beaches are better. I don't know, मतलब कुछ भी कहीं से भी लोग वो हो सकते हैं. Yeah. I don't think you can make everyone happy. Do you think there's some universal topic? I don't know. I keep thinking about it. I think Yeah. you are that subject. मतलब मैं अपने बारे में तो सब कुछ बुरा बोल ही सकता हूँ ना. अपना तो मैं मजाक I कि think मैं वो बहुत जरूरी होता है. If you can laugh at your own self or make jokes at your own self. कि मैं बेवकूफ हूँ, मैं हाँ. चश्मिश हूँ. अब हाँ. तुम अगर अब और इस मुझे बात पे बड़ा ऑफेंस अच्छा- ले रहे हो मुझे तो तुम्हारी मुझे प्रॉब्लम है. बहुत ही अच्छा लगता है. मुझे लगता है इसमें किसी को बुरा नहीं लगेगा कि ये तो अपना ही मजाक बना रही है. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. इनफैक्ट इन माय वीडियो एंड इनफैक्ट somebody very when I used to started making videos, somebody told me also कि in your videos you are always the बेचारी girl, you know, like you are always that बेचारी girl who, you know, जिसका मतलब she's the failure at the end of the video, or you know, उसके ऊपर ही मजाक हो जाता है. So I was like, I'm happy with that, यार. And was this understanding starting से ही या धीरे धीरे कल्टिवेट हुई है? नहीं, स्टार्टिंग से ही था. I मतलब think इतना I ऐसा always वो used to feel ईगो इशू नहीं है कि अरे मेरी एक प्रोजेक्शन है और वो हाँ नहीं है, जबकि लोगों ने बोला कि होनी चाहिए. exactly. होनी So चाहिए. this is one of my sort of criticisms of this influencer culture that जैसे वो होता है ना WWE होता था जहाँ फाइट भी फेक है, जो कैरेक्टर्स है उनको भी पता है सब कुछ फेक है, ऑडियंस को भी पता है, बट स्टिल एवरीबडी इज इन ऑन इट. तो वो मेरे को थोड़ा वैसा लगता है अबाउट द इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड, बिकॉज आई हैव नोन अ फ्यू पीपल बिहाइंड द सीन्स कि अच्छा ये तो पहले मेरे स्कूल में था और अब ये इन्फ्लुएंसर बन गया, एंड आई हैव मेट अ लॉट ऑफ दीस पीपल बिहाइंड द सीन्स, एंड आई एम लाइक कि ये लोग मतलब everybody is in on this. वो जो क्लासिक मीम है ना कि एक इन्फ्लुएंसर लड़का और इन्फ्लुएंसर लड़की डेट नहीं करते, कोलैब करते हैं. तो वो वाला चीज है, every aspect of their life moves around the projection that they have. So वो बैलेंस करना कितना हार्ड होता है. Like is my assessment correct कि मतलब वो फेकनेस वाली वाइब नहीं आती थोड़ी? यार मुझे अभी रिसेंटली मेरे को किसी ने बोला और मैंने and I thought to myself that I'm not somehow not friends with a lot of creators. I don't know, मतलब मेरा वो सर्कल ही बहुत कम है. तो वहाँ पे whatever friends I have are my school friends or whatever. तो मेरे को वो वाइब कभी आई नहीं because I've always met them in like events or something like that. तो मेरे को वो ऐसी फेकनेस वाली वाइब ज्यादा तो नहीं आई. बट हाँ, हैविंग सेड दैट मुझे ऐसा भी कभी-कभी लगता है दैट लाइक यू सेड प्रोजेक्शन की हमें ये बन के रहना है सोशल मीडिया पे, या यू नो हमें ये हमने बना लिया है तो अब हमें वी हैव टू बी ट्रू टू आवर यू नो ऑनलाइन पर्सोना, तो वैसा हमें बनाना है. बट मेरे साथ नहीं है ऐसा बिकॉज आई थिंक द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग इट आई थिंक यू लूज द रिलेटेबिलिटी. आई फील बिकॉज हाउ कैन समबडी बी यू नो लाइक दिस ऑल द टाइम. ऐसे वाला एक मेरे को वाइब आ जाती है. तो मुझे ऐसा लगता है सम पीपल हु हैव क्रिएटेड देयर ऑनलाइन पर्सोना इन अ वे, तो उनको ना वो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है अपनी रियल लाइफ में भी, या इवेंट्स में भी उनको वैसे ही रहना पड़ता है, या यू नो व्हाटएवर. सो मुझे ऐसा लगता है कि वो it's too much pressure. I mean, and the moment you start doing it, and I always tell people that I personally started creating content purely for the joy of it. You know, I never felt कि मेरे को, and this might come across as show तो कुछ भी बोल रही है, but मुझे को कभी ये नहीं था कि मेरे इतने फॉलोअर बन जाए और इतने सब्सक्राइबर बन जाए और इतने व्यूज आ जाए. But see, that's also a part of the character of an influencer, ना कि you have to be humble and नहीं, बट मुझे ऐसा कभी, और मुझे बड़ा मजा आता था वीडियो बनाने में. मुझे लगता था अरे यार अरे if I'm laughing then you know I should put it out or whatever. तो मुझे ऐसा लगता था कि once you start doing that कि अच्छा मुझे तो इसी टाइप का कंटेंट बनाना है, मुझे तो यही करना है, तो you will lose that joy. And once you lose, and I remember in radio also we were told that if you are enjoying your show then the audience will enjoy the show. If you are not enjoying your show then nobody will enjoy. And मेरे को स्टेज पे भी यही बोला जाता था, have fun. You know, if you are hosting something or if you are on stage doing something, just have fun, because if you are having fun, the audience will have fun. So what's happening with you right now? What are some things that you're working? Are you just doing future plans? No, present plans then future.
some things that so I keep planning if I should shift to Bombay and try my hand at like acting and this that. Should I do it? Should I not? तो मेरे दिमाग में ये चलता रहता है बहुत most of the time. Is it that dilemma again वो जो engineering versus RJ वाला है? हाँ शायद. तो फिर से सारे रिश्तेदार मिलके डिस्कशन करें. अच्छा खासा तो चल रहा है. अच्छा तो चल रहा है क्यों जा रहा है? नहीं बोलते हैं मुझे लोग ये सही तो चल रहा है आपको दिल्ली में वहाँ क्यों जाना है ऐसा. और मैं कहती हूँ तो वो and they are also not wrong because अब तो ऐसा हो गया है कि आप कहीं से भी हो if you can give auditions from anywhere right because they generally ask for like they weren't wrong engineering के time पे भी. It's just that you don't know that you can do it until you do it. Yeah, you do it. True. You don't know until you do it. Until you try. But हाँ तो वो मेरा है because so I keep thinking should I take like professional acting classes? Should I join a workshop और वो सब मेरे दिमाग में चलता रहता है. So हाँ probably Bombay could be the next step is what I feel. हाँ. You edit your stuff खुद से? On my own. I like to do that. Nice. Premiere I like to edit. नहीं FCP. Oh, you're Mac girl. Mac girl. इतना तो influencer money से इतना तो हो ही जाता है. नहीं but aunties of the world earning अच्छी आ रही है influencer बनके. नहीं but मुझे I like to edit my own videos. I feel that I don't know. I just feel that when you make a video, you already have the output in your mind. जब आप वीडियो बनाना स्टार्ट करते हो तो you already know कि मेरा वीडियो कुछ ऐसा दिखेगा फाइनल में. And to explain this to someone becomes very tough. या तो आप पूरा उस एडिटर पे छोड़ दो कि it's your vision and whatever you want to make out of it. But वो I'm assuming being an RJ and being a producer backstage वो edit का sense होगा एक basic. हाँ थोड़ा बहुत तो था मेरे को. And my final question is, what is your favorite character of your own? Okay. तो in fact पता है recently I was just discussing with someone कि मेरा कोई बहुत ही set character नहीं है अगर देखा जाए तो. They don't even have names, no? Exactly. I was just going to say they don't even have names. So मेरा कोई ऐसा set character नहीं है. Which I sometimes also feel that am I lacking on something if I don't really have a character that I'm known by. तो वहाँ पे मेरे को कभी-कभी I'm in a dilemma with my own self. But like भुवन बाम उसने पूरा शो बना लिया अपने कैरेक्टर. Exactly. हाँ. Like a character or an IP, तो वैसा मेरे को लगता है कि वैसा शायद मेरा कुछ ऐसा like one stand out हो वैसा कुछ अभी नहीं है. So but whatever characters I do I really enjoy doing them. Like teachers, like you said, is one of my favorite characters. In fact, my first video that ever went viral was a teacher video only. So it will always be very close to my heart. So teacher, of course, is one of those. And like I said, a lot of characters I use if I want to like talk about something controversial. So just pass off. So teacher, मुझे बहुत मजा आता है. एक मैं bride character भी करती हूँ, especially during the शादी सीजन. तो वो मेरे को बहुत अच्छा ये सब भी रहता है कि शादी सीजन में ब्राइड वाला. मतलब I try to do that. This is very nice. काफी मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है ये मेट्रिक. काफी इंटरेस्टिंग है कि अब शादी सीजन है तो पार्लर और ब्राइड. and this was also purely hit and trial only क्योंकि मुझे याद है शादी सीजन में मैंने बहुत सारे ब्राइड वीडियोस बनाए. They got decent views. पर फिर मैंने ऐसे randomly एक दिन ब्राइड वीडियो बना दिया and it didn't get as much traction. So then I thought to myself that क्योंकि अभी लोग इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, लोग इसके आसपास देख ही नहीं रहे हैं, लोग शादियां अटेंड नहीं कर रहे हैं, then how will they relate to it? So then it was like a conscious effort कि अच्छा शादी सीजन में ही बनाऊंगी मैं उस टाइप के वीडियोस. तो अब अगर मान लो कोई अच्छा आइडिया आ गया ब्राइड का तो you'll keep it ready, रील बना के रख लो. और आए मेरे पास 2 शादी वाले वीडियोस है मेरे पास जो मैंने लिखे हुए हैं कि मैं शादी में जब जाऊंगी तो बनाऊंगी. तो हाँ, तो that way I enjoy making these characters. मुझे बड़े अच्छे लगते हैं. There's this period character I like a lot when I talk about periods, like I said. तो वो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है. I remember I made this video. It was for one of the clients only, wherein so period as a character is giving appraisals to like
cramps and stains and you know like Oh. so अच्छा इस महीने तुमने अच्छा नहीं परफॉर्म किया, क्रैम्प तुम ज्यादा क्रैम्प्स नहीं दिए, you know इस so Oh, इस अच्छा, महीने it's तुम from the POV of what can torture you the most. so period is giving the appraisal कि अच्छा cravings इस महीने इसकी cravings अच्छी नहीं थी, you know like that. So that is something that I enjoy talking about. So हाँ वो मेरा one of my favorite, not favorite but some a nice character. I think a character that really challenges me, I think becomes sort of a interesting character. Nice. Thanks a lot for having this chat with me. मजा आ गया. Thank you. I hope it was Yes. of any use. I It mean, was amazing. All the best for your Bollywood dreams. oh yes. Let me know Thank what you. happens of that dilemma कि बॉम्बे I जाना है know, नहीं जाना. I know. Yes. Yes. Definitely. But But I hope thanks a this was lot for okay. I having hope this chat with me. I answered all your questions nicely. Yeah. मैं नंबर थोड़ी दे देना है मेरे को. ठीक है. But thank you for your time. It was lovely. Thank you.